Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. Once again, another practice passage we are doing in this video. The genre is once again social commentary, very light-hearted, very easy to do passage. We get passages like this once in a while in maybe one of the slots in any given year. So I thought that it would be a good idea to give an example of what such a passage could look like. And you should not be missing out on such very pretty, very beautiful RC passages. As usual, I would recommend that you pause the video here, then use the timestamp, which I always drop down in the comment section or the description box, solve the question, jot down the answers, and then come back to this point to check whether your answers went right or not. All right. So coming to this passage, but before that, if you have not subscribed to the channel, please press subscribe. Please hit the bell icon so that you get a notification as soon as I upload any RC passage or any other decent practice material. With that being said, let's take a look at the RC passage now. Okay. So coming to the passage, if you have read it, you must have found कि बहुत ही pretty, बहुत ही simple सा passage है. शुरुआत ऑथर बहुत इंटरेस्टिंग चीज से करता है कि देखो न्यूयॉर्क टाइम्स में ना एक आर्टिकल आया. ऑल राइट. तो दिस आर्टिकल में क्या बोला गया कि लेट्स यूज एक्स वाई एक्सिस टू अंडरस्टैंड. ऑल राइट. Let's x axis represents reading. All right. And let's say y axis represents anti socialness या फिर yes anti social type perception. ऑल राइट. तो ऑथर कहता क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स वाले का क्या बोलना है कि हार्ड कॉपी आप किताब पढ़ते हो ना, अगर प्रॉपर खुद के साथ फिजिकल हार्ड कॉपी कैरी कर रहे हो तो आप समाज को बहुत ज्यादा एंटी सोशल लगते हो. वही ऑन द अदर हैंड, इफ यू कैरी एन ई रीडर, तो हियर फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग ई रीडर टाइम एंड अगेन, आई विल यूज अ वेरी नाइस रिलेटेबल टर्म, किंडल. ओके. किंडल आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है. तो बस एक प्रकार से समझ लो ये भी एक ई रीडर है. Although at the time this passage seems to be written, it does not feel like कि आ चुका था इंडल या फिर even Wi-Fi was there because of that last paragraph over there. I don't think that this passage was written anywhere in the past 4 5 years. At least seems to be at least 15 16 years old. Anyway, let's get down to the narrative now. Okay, so what is this? This blue thing is reading from a hard copy, from a physical copy, and this is from, let us say, from Kindle e-reader. तो न्यूयॉर्क टाइम्स का ऐसा बोलना है कि अगर आप ना हार्ड कॉपी से पढ़ते हो तो समाज वाले सोचते हैं यार ये बंदा ना बहुत ही एंटी सोशल लग रहा है. और अगर आप ई रीडर से पढ़ते हो तो पीपल आर लाइक अरे वाह वाह, ओके ओके, तुम तो बड़े मॉडर्न, बड़े टेक savvy बंदे लग रहे हो, तो आके आपसे बातचीत करेंगे लोग वगैरह वगैरह. तो इट सीम्स लाइक ऑथर सेज ये क्या बकवास है, हट, आई रिजेक्ट दिस ऑल. ओके. तो ऑथर ने एकदम क्लियर कट बोल दिया ये सब बोगस है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. क्यों? क्यों ऐसा? बिकॉज ऑथर से देखो, सबसे पहले तो उसने एक बहुत बड़ा प्यारा सा क्लैरिफिकेशन दिया है हमको, दैट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द ई बुक, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द किंडल. लाइक देयर आर सम इमेच्योर पीपल हु से नहीं नहीं हम तो हार्ड कॉपी से ही पढ़ेंगे, हमको तो ई रीडर से इस तरीके से टेक्नोलॉजी टूल से नफरत है. तो ऑथर से मैं उनमें से नहीं हूँ. मुझे आप कोई भी फॉर्मेट में पढ़ने बोलो मैं पढ़ सकता हूँ, वेदर बी इट हार्ड कॉपी, वेदर बी इट अ किंडल, या फिर आप एक फौज लगा दो मेरे सामने चीटियों की, एक एक चीटी एक एक चावल का दाना कैरी करेगी और उस एक चावल के दाने के ऊपर में एक एक अल्फाबेट लिखा होगा. अमेजिंग हाइपरबोली यूज बाय द ऑथर. ओके. प्लीज कीप इन माइंड दिस एंड वाला जो स्टोरी थर्ड पैराग्राफ में ऑथर ने लिखा है ना, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली बाय द नेम ऑफ हाइपरबोली. हाइपरबोली का मीनिंग क्या होता है? एग्जैजरेशन, जो कि ऑथर भी जानता है कि कभी संभव नहीं है. समथिंग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबली एग्जैजरेटेड, नेवर हैज अ चांस ऑफ गेटिंग हैपनिंग इन रियल लाइफ, बट इट इज देयर टू do some kind of give out some kind of dramatic effect for some kind of emphasis. So definitely author is emphasizing here कि भाई मुझे सिर्फ पढ़ने से मतलब है, मैं माध्यम से मुझे कोई फर्क नहीं गिरता. आई डोंट केयर अबाउट द मीडियम एट ऑल. ओके. देन ही कम्स डाउन टू हिज एक्चुअल ओपिनियन. ही सेज कि पढ़ते वक्त अगर एंटी सोशल लगते हैं हम, बी इट फ्रॉम एनी रीडर और बी इट फ्रॉम अ हार्ड कॉपी वॉट, इसके बारे में मतलब इतना क्यों आश्चर्य है? Isn't that the entire point of reading? जब इंसान पढ़ता है तो it is a clear cut implication that that guy does not want to socialize. He does not want to talk with people out there, maybe who might be beside him or who might be there in his proximity. And that is actually also a part of the appeal of reading. कुछ लोग होते हैं ना कि भाई नहीं एकदम से मिंगल होना आजू बाजू के लोगों के साथ में, तो एट दैट टाइम दे कैन रिसोर्ट टू टेकिंग आउट द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग.
which can give them some kind of secure bubble and also send out a message कि हाँ भाई चलो ठीक है, at this moment I don't want to socialize. ऑथर से ये तो बट नेचुरल है, उसके अंदर में ये न्यूयॉर्क टाइम ने ये क्या घटिया आर्टिकल क्यों छाप दिया. ओके, fourth paragraph में that narrative is continuing and author is actually bringing out another famous seems to be famous, I don't know who this author is, some lady by the name of Ann Tyler. इन्होंने खुद की किताब में तो एक्चुअली एक सजेशन भी दिया है ट्रैवलर लोगों को कि दैट ओके इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय लेट्स से बस, ट्रेन, मे बी इवन अ प्लेन एंड यू डोंट वांट टू मिंगल विद पीपल अराउंड यू, तो बस बुक लेके बैठ जाओ, वेदर यू रीड और नॉट डज नॉट मैटर. पीपल अराउंड यू विल थिंक अरे अच्छा ओके ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है कुछ, तो चलो जाने दो, इससे बात मत करो, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम, एंड दैट वे यू कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्मॉल टॉक विद पीपल अराउंड. वंस अगेन अनदर थिंग, एक टर्म है स्टैंडर्ड टर्म जो आपने तो शायद कुछ लोग ना जानते हो, तो आई एम पुटिंग इट आउट देयर. स्मॉल टॉक, ये आपको अगर मिल जाए टर्म कहीं पे, तो व्हाट डज इट मीन? आइडल चिट चैट. छोटी मोटी बातचीत हम करते हैं ना, आज मौसम कैसा है, आज तो बड़ी गर्मी है, आज बड़े ठंड है, बारिश होने वाली है, वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट. So that is called as making small talk. When you cross people and you have to strike some kind of conversation for a minute and then you go on your way, उसको बोलते हैं making small talk. Anyway, okay, passage में कहीं पे नहीं है टर्म, but in the course of our discussion because it came to my mind, that's why I'm putting it out there. Anyway, so author is saying कि देखो author लोग भी दूसरे वाले अपनी किताबों में ऐसे टिप्स दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इफ यू वांट टू अवॉइड स्मॉल टॉक, आप बढ़िया किताब लेके बैठो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है. ठीक है, तो राइट अंटिल दिस फोर्थ पैराग्राफ का एंड द नैरेटिव इज वेरी प्लेन, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑथर इज क्लियर कट अगेंस्ट दिस बुलशिट न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे एंड ही सेज यार मुझे बोर मत करो ऐसी चीजों से, मेरे लिए रीडिंग इज अ वेरी एंगेजिंग, पर्सनली एंगेजिंग एक्टिविटी विच ऑल्सो हेल्प्स मी disconnect from the world around. And he has continued this point later on from the fifth paragraph also, but here he is bringing out the presence, he is bringing out the opinion of somebody by the name of Jonathan Franzen. Now, this guy seems to be pretty famous because this guy has made it to the cover story of Time. I am assuming that this is that famous Time magazine book. तो यहाँ पे ना कंफ्यूजन होने की गुंजाइश नहीं रखना कि लेव ग्रॉसमैन कौन है, जॉनथन फ्रैंजन कौन है और टाइम के कवर पे कौन आया, हे भगवान क्या हो गया. तो हियर द नैरेटिव इज वेरी सिंपल, आई विल पुट इट बिफोर यू. लेट्स से दिस इज टाइम. What generally happens is actually Time magazine is very famous for nominating a person of the year. एक टाइम पे कभी डोनाल्ड ट्रम्प भी था पर्सन ऑफ द ईयर, कभी ये भी थे जो बाइडन एंड कमला हैरिस, सो ऑन सो फोर्थ. एवरी ईयर दे नॉमिनेट सम एमिनेंट पर्सनालिटी एज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर. so of course their magazine is also pretty reputed. तो उनके कवर पे आप अगर फीचर होते, if you feature on the cover of that magazine, it's a massive achievement, right? मतलब आपने कुछ तो बहुत ही सब्सटैंशियल किया है आपकी जिंदगी में. So who got featured on this story? Jonathan Franzen. Okay, and of course, if photo देके काम खत्म नहीं होता, inside the magazine you also have a very good article covering you. And who wrote that article? Who was the author of that article? Author is this Lev Grossman. ठीक है. So in this narrative, Lev Grossman is actually not anybody of a concern. हमारा concern किससे है? Mr. Jonathan Franzen से. So regarding Jonathan, author से ये आदमी ना थोड़ा सा weird हुआ है. ओके, ही सेज दैट राइटिंग बाप रे कितना मिजरेबल वर्क है, और इसके हॉबीज क्या है, तो भैया हम बर्ड वॉचिंग करते हैं, अच्छा पक्षी देखते हैं. ओके, तो अदर सेज इवन दो दिस गाय इज अ बिट ऑफ अ वियर्डो, बट ही हैज वन वेरी लेजिटिमेट ओपिनियन अबाउट रीडिंग. ओके, he makes a really good point when it comes to disconnecting from the world around us, getting down to reading and immersing yourself in the world which your book is giving you. Okay, and what is Jonathan saying? It is given to us over here in this paragraph and also in this paragraph. Rather, some piece of information is also given in the penultimate one. So effectively, you can say that the last three paras, सबके सब Jonathan Franzen के largely opinions है, which the author also agrees with. Okay, nowhere is the author countering any of Jonathan Franzen's opinion. Rather, he has headlined those by saying कि एकदम legitimate बात है. Jonathan is very convincing in what he says regarding reading. And what does Mr. Jonathan say? He says कि देखो यार, हमारी टेक्नोलॉजीज आसपास दुनिया भर की बहुत हो गई है, नॉन स्टॉप बैरेज ऑफ इंफॉर्मेशन चलता है. व्हाट इज ही रेफरिंग टू? इज ऑफ कोर्स रेफरिंग टू इंटरनेट एंड नॉन स्टॉप इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन दैट वी कीप ऑन गेटिंग. मेल आ गया, ये आ गया, वो आ गया. ऑथर सेज देखो ऐसे इसमें बुक्स आर अ रियली सॉलिड टूल टू हैव. ओके, कि द मोर यू इमर्स योरसेल्फ इन एन इन्वॉल्विंग बुक, ये सोशली यूजफुल भी है, इवन दो यू आर कटिंग योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम सोसाइटी इन दैट मोमेंट, but it is actually long term में very good. Why?
because it is helping you get wiser, it is helping you make really good responsible decisions. और जब आप एकांत में जाते हो, जब आप वो solitary mindset में जब जाते हो when you are reading, so that frees up your mind, that gives you the ability to engage with the world also. You can actually engage positively, productively with the world. Otherwise this world is very unmanageable. Otherwise the world is even a bit scary, of course, not to be taken in a literal sense, but the world seems to be a very messed up place. So when you are a reader, when you immerse yourself in your book properly, so it gives you a kind of much needed break, which can help you understand, which can help you figure out how to engage productively with the world outside. ठीक है? तो very very beautiful opinion there. Being an avid reader myself, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो भी opinions यहाँ पे लिखे गए पैसेज में. The author continues this line of thought कि इतना constant जो hammering होता है information का upon everybody's minds, so reading gives you a very welcome break from this. Okay, and reading is actually an antidote in such a scenario. When you have too much information non-stop continuously demanding your attention, reading a book is a very welcome break. And unfortunately author says, यार इतना सब प्यारी बातें होने के बाद में भी few people will do what Mr. Franzen is saying. Okay, यहाँ पर एक आइडिया आपको क्लियर होनी चाहिए. प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन few and a few. The first one, few, is negative. इसका मतलब nobody, almost nobody. ठीक है. और a few मतलब some people, not many, but yes, positive है implication. It means कुछ लोग तो कर लेंगे. और फ्यू का मतलब है हार्डली कोई करेगा, शायद ही कोई सुनने वाला है. तो व्हाट इज द ऑथर यूजिंग हियर? फ्यू. व्हाट डज द लास्ट पैराग्राफ से? कि मिस्टर फ्रांजन जो बोलते हैं ना, बोलते बहुत एकदम सही बात है, लेकिन करेगा कोई नहीं ऐसा, नहीं के बराबर. क्या बोलते हैं मिस्टर फ्रांजन? देखो एक काम करो, जो लैंड वायर आता है ना आपका, बढ़िया आपके कंप्यूटर में लगाओ आप. ठीक है, सिर्फ लगाओ ही मत, उस लैंड वायर के एंड पे बढ़िया सुपर ग्लू लगाओ, अपने कंप्यूटर में फिक्स करो, और फिर वो केबल को ही कट कर दो. मतलब इफेक्टिवली व्हाट मिस्टर फ्रांजन इज सेइंग इज कि आपके कंप्यूटर का जो लैन पोर्ट है, मतलब वेयर इट इज गेटिंग इंटरनेट फ्रॉम, उसको ही ब्लॉक कर दो. ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी. यानी ना इंटरनेट आ पाएगा, ना नॉन स्टॉप बैरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, और ना ही आप पागल हो गए. So of course this is funny, not to be taken really very literally. And because of this mention, na, this Ethernet cable, this LAN cable wala thing, I think this was written prior to 2010. But कहीं ना कहीं iPad का भी mention है यहाँ पर. Where is it written? Yes, over here. This guy is using an iPad. So I think an iPad came around in 2009 or 10, something like that. ठीक है. तो चलो, राउंडिंग ऑफ द पैसेज वंस अगेन, वेरी प्रिटी, वेरी नाइसली रिटन पैसेज. सिंपली ऑथर यही एक पॉइंट ड्राइव होम कर रहा है, दैट रीडिंग अ बुक इज एन अमेजिंग थिंग. इट हेल्प्स यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इमीडिएट वर्ल्ड अराउंड यू. यू इमर्स योरसेल्फ इन रीडिंग वाला बुक. एंड इसका एक अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज मिस्टर जोनाथन हैज गिवन अस, दैट व्हेन यू इमर्स योरसेल्फ इन अ बुक, of course you take a break from the world around you, but that break helps you engage productively, helps you understand the world around you in a far better manner. Okay, so reading books, they provide a very welcome getaway from the sheer madness that surrounds us in the form of non-stop information. All right, so chalo, with that in mind, let me clear up the screen over here. Okay, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, बहुत तमन्ना है मेरी, बहुत इच्छा है कि आप लोग भी किसी दिन टाइम मैगजीन के कवर पे आओ. ओके, एंड इफ एट ऑल वन डे, if anybody succeed in doing that, please remember that I mentioned this wish of mine in this video, and please get in touch with me once again. Okay, at least मैं तो जिंदगी में किसी से बात कर लूँ यार कि अच्छा आप टाइम मैगजीन के कवर पे हो, क्या बात है. ओके, अभी आई नो दैट आई विल नेवर बी एबल टू मेक इट, वेरी ऑनेस्टली, but I would definitely like to be able to talk to somebody someday जो इतना बड़ा अचीवमेंट कर गया है. All right, let's come solve this question now. According to the passage, which of the following cannot be understood as a role function of books? अच्छा जी, ठीक है, बहुत ही सिंपल. क्या क्या देती है किताब? आपको ब्रेक दे रही है दुनिया से. ओके, इट हेल्प्स यू इन अ वे बी एंटी सोशल, नॉट एंटी सोशल, दैट एक्चुअली इज अ वेरी नेगेटिव टर्म, but it helps you take a break from the world around you. And at the same time, according to Franzen, it also helps you engage in a better manner with the world. ठीक है, चलो.
Option A, providing solitude even in the middle of the crowd. Bang on, 100%. Yes, it can be inferred, but हमको क्या चाहिए? Cannot be. So answer A out. B, allowing an individual to escape the world. Definitely yes. Author is saying कि आप real world से cut off होते हो और किताब की दुनिया में खो जाते हो, which is such a pretty thing, such an amazing thing. Good. So of course this can be inferred out. D, creating a space for introspection and engagement with the world. Please remember, Jonathan Franzen is saying this. कहा गया, कहा गया. All right. It helps you make responsible decisions and you can actually engage productively with the world. Okay. So don't think that D is not mentioned anywhere. It is actually given and hence answer becomes clear cut. Option C. कहीं पर भी passage में बोला नहीं है that books will give you information and ideas. Okay. ऑप्शन सी एक्चुअली स्टेटमेंट इज टेक्निकली ट्रू, किताबें इंफॉर्मेशन देती है, आइडियाज देती है, बिल्कुल, बट पैसेज में कहीं नहीं बोला, ठीक है. तो दैट इज अ वेरी प्रिटी थिंग. लेटर ऑन रियलाइज हुआ था मुझे भी ये क्वेश्चन पढ़ते हो कि अरे बाप रे, इतनी बेसिक थिंग नोवेयर मेंशन्ड इन द पैसेज एट ऑल. इट इज सरप्राइजिंग, बट यस, दैट इज हाउ इट इज. आई होप दैट यू गॉट इट करेक्ट. Actually, the questions and the passage fall on the easier end. So I expect you to get 4 on 4 in this passage in a tight time frame of 8 minutes or something like that. ठीक है. So do let me know your performance in the comment section. Okay, let's go to the second one now. Why does the author mention this instance of reading Tolstoy? Actually, Tolstoy, very famous author, a Russian, through a trail of ants. Okay, as I mentioned earlier, this is a hyperbole. He is also, of course, not literally saying कि भाई चीटियां चावल के दाने and then reading the alphabets printed out. No, what he is trying to drive home the point is that कि मुझे बस पढ़ने से मतलब है. I don't care about the medium. I just want to read. So answer becomes A. To highlight the fact that the mode of delivery of literature does not matter. It is not of significance. हो गया. B, C, D are completely out of scope. They are complete bullshit. You should be able to get this answer correct. Classic utility based question, but very easy to do. Okay, chalo. With that being said, still if you have any kind of doubt, please let me know in the comment section. Okay. If you haven't still subscribed to the channel, please do so. Helps me get a lot of encouragement. Drop your comments, drop your performance in the comment section. Now, question 3, what does it say? Which one of the best expresses central theme of the passage? Main idea ढूंढना है आपको. Okay. Reading is a wonderful activity. अगर मेरे बस की बात चले, मैं बस इतना सा लिख के काम खत्म कर दूं. Okay. Actually, the answer becomes option C. Nature of the process of reading. ठीक है. ऑप्शन डी नहीं होगा. आई सस्पेक्ट दैट अ फ्यू मे हैव गॉटन ट्रैप्ड इन दिस. द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग कब होता? अगर पैसेज इज ड्वेलिंग अबाउट पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से ऐसा होता है, पढ़ने से इंफॉर्मेशन मिलती है, दुनियादारी की समझ आती है, न्यू आइडियाज मिलेगी आपको, वगैरह वगैरह वगैरह. ऑल दैट इज द ऑथर गिविंग अस एनी ऑफ दैट? ही इज नॉट डूइंग. He is simply talking about that when you sit down to read, you disconnect very beautifully from the world around you, and at the same time also develop the ability to engage better with the world outside later on. So ये तो process हुआ ना reading का कि what happens when you indulge in reading, and that is why option C. A and B once again are completely absurd, can be rejected very easily. Option D mild trap है, but option C is any day, far better. Okay. With that, let me know if any doubts in this question. If not, now come with me and we will solve the last question. Okay. We are getting done with this passage actually pretty lightning fast. Author calls a good book as an antidote. Okay. Where is it written? Where is it written? Let's highlight it. Let me use a different color. Too much of deep sunset yellow. Okay. Like an antidote. क्या बोला है कि यू गेट अ कांस्टेंट बैरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिस्टर फ्रैंजन इज लाइक यार नहीं, मेरे को एक किताब चाहिए जिससे मैं बच जाऊं, जिससे मैं भाग जाऊं, ये सारी नॉन स्टॉप बैरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. बैरेज का मीनिंग होता है नॉन स्टॉप आपके ऊपर बारिश गिर रही. ओके. बैरेज मीन्स अ शॉवर, एन इंसिस्टेंट परसिस्टेंट शॉवर इन गुड अमाउंट. ओके. अगर समझ लो जैसे अभी रिसेंटली व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, व्हेन आई एम पब्लिशिंग इट, one of the hottest topics that is going around the world right now is this Israel-Hamas war. Okay, if you are watching this after 2023, I don't know what happens with the war at this stage, but what happened is that Hamas fired a lot of rockets on Israel first and also invaded their cities and towns with terrorists as well. So what they fired was, we can call it as a barrage of rockets.
रॉकेट्स. ओके, क्योंकि एक साथ इट इज सेड दैट दे फायर्ड 3000 4000 रॉकेट्स इनटू इजराइल. तो वी कैन से दैट इट वाज अ बैरेज ऑफ मिसाइल्स, बैरेज ऑफ रॉकेट्स बीइंग फायर्ड. ओके, तो यू गेट एन आइडिया व्हाट बैरेज मींस. ठीक है. तो एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो इन्फो दिया है पैसेज में, व्हाट इज एन एंटीडोट. किताब है, अ गुड बुक इज एन एंटीडोट, बट व्हाट इज एन एंटीडोट टू. एंटीडोट का मीनिंग होता है फाइटर, फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग. यू यूज अ टूल टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, तो उसको एंटीडोट बोलते हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, एंटीडोट का इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड इज वैक्सीन. ओके, आप वैक्सीन क्यों लेते हो? कोरोना का वैक्सीन क्यों लिया था हमने? भाई कोरोना ना हो. तो द वैक्सीन दैट वी टुक, वेदर इट इज कोविशील्ड और व्हाटएवर एनीथिंग एल्स, तो इट इज एन एंटीडोट टू द कोविड-19 डिसीज. ठीक है. तो ऑथर कहता है कि क्वेश्चन इज आस्किंग कि अच्छा ठीक है, रीडिंग गुड बुक इज एन एंटीडोट, बट अगेंस्ट व्हाट आर यू प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम? Author says protecting ourselves from constant barrage of information. Answer B. Very straightforward, very easy. And with that, I hope that you got all the four correct. इससे आसान पैसेज आपको नहीं मिल सकता है एग्जाम में. एंड आते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट अ पैसेज लाइक दिस इन ऑलमोस्ट एवरी स्लॉट आउट देयर, बट once a while in one of the slots you can have a passage like this. So make sure you're able to catch it very properly if it ends up coming in your slot, and make sure to solve it. This is where you will, you know, get all your marks, get all your attempts correct, and be able to clear the sectional cutoff बहुत अच्छे तरीके से, convincing तरीके से. All right, तो चलो, thanks a lot for watching. If you like the content, please press like, share, subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, tata, bye bye, take care.